wait for a few more minutes? Yeah, I think both the resource people, Mayanka ji and Gurpreet ji, are already there, and both the coordinators, Meenakshi ji and Parul ji, are also there. So, Ravi, I think we should start and go live. Okay, sir. Okay. So, a very good morning to everyone present here. CUET, the Common University Entrance Test 2022, is being introduced for admission into all undergraduate programs in all central universities for academic session 2022-23 under the Ministry of Education. The Common University Entrance Test will provide a common platform and equal opportunities to candidates across the country, especially those from rural and remote areas, and help those students to connect with different universities. So, in preparation of Common University Entrance Test, University of Delhi has announced an online orientation and guidance program, especially for students from SC और ST backgrounds. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में SC/ST की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो ये प्रोग्राम उन्हें SC/ST स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा टू परफॉर्म बेटर इन CUET एग्जाम, so that those seats can also be occupied. So this program has been organized by Dean Students Welfare in collaboration with Institute of Lifelong Learning. This orientation and guidance program will provide candidates with an opportunity to familiarize themselves with the CUET 2022 pattern and to clarify any doubts the students may have about the exam. So, in order to participate in this DU's online orientation cum guidance program for CUET 2022, interested candidates can visit the registration link. So, every session will offer the opportunity for the first 100 registered candidates to interact with the subject experts. And for the benefit of the entire student body, the orientation program will also be streamed live on the YouTube channels of DSW and ILLL. So our Vice Chancellor, University of Delhi, has encouraged us for organizing this orientation cum guidance program. He has also given a message to us. So can we have that message, please, Mr. Ravi? दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इस काउंसलिंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा डीन स्टूडेंट वेलफेयर और IIL इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि ये एक ओरिएंटेशन और काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जाए। मन में ये था क्योंकि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये पहली बार हो रहा है, इसमें किस तरह का एग्जाम आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव है तो कहां पर फोकस करना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। तो उन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सोचा कि एक इस तरह का सेशन आयोजित किया जाए और विशेषकर इसमें फोकस उन बच्चों का रखा जाए जो कि SC/ST कैटेगरी से आते हैं। कई सालों का ऐसा अनुभव भी आया कि कई बार SC/ST की सीट्स खाली भी रह जाती है। कोई भी सीट खाली रहे किसी भी विश्वविद्यालय के लिए चिंता की बात है, और अगर SC/ST की सीट खाली रहती है तो और भी चिंता का कारण है। इस सबको ध्यान में रखते हुए और पहली बार हमने ये स्टेप जो लिया है और ये विद्यार्थियों के हित में है, हम सबको ठीक से गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक से फिर पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे कॉलेज में एक आपकी इच्छा के अनुसार कोर्स में एडमिशन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, नए नए उसमें आयाम जुड़ रहे हैं और जो टेस्ट के माध्यम से आएंगे सारे देश के बच्चे अपने अपने हिसाब से तैयारी करके आएंगे, तो हमको बहुत सिंसियरली इसको पढ़ना भी चाहिए। मैं आज उस बात पे नहीं कह रहा कि जो पहले हमारी पद्धति थी CUET से पहले की, उसमें कुछ खामियां थी या नहीं थी, लेकिन आज जब देश ने तय किया है कि CUET से होगा, हम सबको उसके हिसाब से अपने को ढालना है
और ये जो काउंसलिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उस ढालने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा स्कोर लेकर एडमिशन लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। Thank you, Mr. Ravi. So today in this session, we shall talk on two domain specific subjects through our subject experts. So one is computer science plus informatics practices, and another is mathematics. And we are lucky to have our experts here. And we shall also take queries after completion of both the sessions. So over to Dr. Meenakshi. Yes, thank you, Dr. Parul. I would like to introduce today's first subject expert. So, Dr. Parul Jain is an assistant professor in the Department of Computer Science in Atmaram Sanatan Dharm College, and she's also a fellow at ILLL. She has over 13 years of teaching experience in the University of Delhi. She has many publications in reputed journals like Taylor and Francis, iOS Press, and Springer. And she has also organized a number of seminars and workshops in the university. So over to you, Dr. Parul. Please begin your academic session. Good morning once again, and thank you, ma'am, for your wonderful words. So, in this session, I would be taking various apprehensions about domain specific subject, that is computer science plus informatics practices. So, now without wasting time, I come to my PPT. So, is my screen visible? Yes, Dr. Parul, it's visible. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. So, pattern of examination and yeah, CUET 2022 will be conducted in it will be a computer based test, and we shall have objective type multiple choice questions, and all the correct answer will give 5 marks, and incorrect option, if marked, then 1 mark will be deducted. So in the examination, and unanswered question will give 0 mark. So, and details can be obtained through NTA website, and link is also given. So in the learning, other learning resources, we have syllabus. So first, syllabus can be obtained from that NTA website. So there we have information bulletin and syllabus option, as we can see here on the screen. And in syllabus, we have computer science syllabus also, the detailed syllabus. So all the topics are mentioned there. So this can be obtained from NTA website. So as we can see in the syllabus of computer science plus informatics practices, it is mentioned that we shall have 2 sections in the paper. Section A will have 15 questions covering both computer science and informatics practices, and which will be compulsory also for all the candidates. So all 15 questions will be compulsory. So there is no choice in this section, and questions are taken from both the subjects, computer science plus informatics practices. So we have that syllabus for section A also, which is given there on this in this PDF present on NTA website. And another section is section B. Section B can be so computer science can students can opt B1 section, and informatics practices students can opt B2 section. So so this is different. Both the syllabus of both these sections, B1 and B2, is different. And in computer science section, that is in B1, so we shall have 35 questions, out of which 25 questions need to be attempted. And in B2 also, we shall have 35 questions, out of which, and those questions purely be from informatics practices syllabus, out of which 25 questions
will be attempted. So section A is common, and B is different for computer science and informatics practices students. So besides this, students can refer NCRT website also. So there all the textbooks are available. So for class 12th on computer science as well as informatics practices. So uh, another, all these websites are government websites, and another learning resource is CBSE website. So the link is given here. So in CBSE website we have uh, question banks on computer science as well as informatics practices. So sample question papers are available there, and they contain that MCQ based questions. So so they can also be used for practice purpose. And another link is also from this CBSE website. There we have additional practice questions, question papers where questions, MCQs, multiple choice questions, are available on computer science as well as informatics practices. So another learning resource which can be used is this website Diksha, where we have lot of learning material. We have books also as reference material. Online tutorials are available, and practice papers are also present. So this site can also be used. Another link is this for open learning. So this is Institute of Open Learning. So here we all do have that practice question papers. Digital textbooks are available. Video tutorials are also present for clarification of any of the topic. So these are the websites which can be used for by the students for practice purpose, and to get textbooks and different type of reference material. So multiple choice question. So uh, so the first question, if you see this question source is also mentioned, the question is taken from CBSE website. So first question is, which of these functions can be used to set a file's current position? So we have seen four options. First thing which I would like to say to the students, that please read the question carefully. Don't be in hurry. Read it twice, thrice, so that, and read it carefully. Since most of the times the answer lies in either in the options or in the question itself. So, if we see this question, which of these functions can be used to set a file's current position? So we do have four options: seek, set, tell, open. Now, if you see it carefully, then open is used to open the file, right? And tell is used to tell something. So here in this case, tell is used to tell the current position of the file pointer. And set function with respect to file in Python is not available. It is used to set the create set of objects. So now we are left with seek function. So seek function is used to move the file pointer to the specified position of the file, right? So seek is the right answer. So if we see that open, as name itself is saying, is used to open, tell is used to tell something. So here in this case, it is used to determine the current position of the file pointer. And set is not there with respect to file, so seek. So if we read these options carefully, we shall find that seek is the most appropriate answer. And it also moves the file pointer to the specified position of the file. Now, next question, if we see that when setting the current position of a file, the position cannot be set with reference to which of these? The beginning of the file, current file position, middle of the file, the end of the file.
So if you know the seek function, then the second argument which is used there in the seek function is from. So if from is set to 0, it means that use the beginning of the file as the reference position. And 1 means use the current position as the reference position. Right? And if it is set to 2, then end of the file would be taken as the reference position. So there is no value available for end of the file, middle of the file, right? So for beginning we have 0 value, for from option, and for current file position the value is 1, and for this end of the file the value is set as 2. So for middle of the file we don't have any value which from can contain. So this C is the right answer. We cannot set with reference to middle of the file. So file is the middle of the file is the most appropriate answer. Now next question is, which of these points about the return statement is false? Which is false, not true. So we have to see which is wrong. So now if we see return statement, as we know, return statement returns the control from the function to the calling function. Now in the first option, if we see, a return statement can only be used inside a function. Yes, of course, it can only be used inside a function. Since the motive of return statement is to return the control, and always a function returns the control back to the calling function. A return statement can be used without any expression. So uh, we know that any expression can be used, or that might not be used. So may be used or may not be used. So can be used without any expression. This is true. Next, when encountered, a return statement terminates a function. So yes, since control returns back to the calling function, so the function in which that return statement is being used, that terminates. So this is also true. A function cannot have more than one return statement. So this is false. We can have more than one return statement, but only one return statement is executed based on the condition. We may have several times this return statement inside the function, पर उनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि जैसे ही वो एग्जीक्यूट होती है कंट्रोल रिटर्न हो जाता है बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, तो एंड नेवर कम्स बैक टू द फंक्शन. सो this is false. We can have more than one return statement. So D is the most appropriate answer. So next is a CSV file. So everybody knows the full form of CSV, comma separated values. Name itself is saying values are there. So values can be, we know that values can be numeric, or that can be alphanumeric also. So a CSV file is a text file. So in a text file, we always have text. That is, we may have alphabets or numbers or digits, right? So a text file never have images. So a CSV file is a text file. Yes, it is a text file. It can store images. No. Name is also saying comma separated values. So how it can contain that images, right? So is a type of Python program. So it's not a Python program. We contain that contains only data in the form of values. Is a computer software validation file. So CSV का full form क्योंकि comma separated value होता है, तो computer software validation तो नहीं हो सकता, right? So the most appropriate answer, if you see it carefully, is a text file. Right? So if you read all the options carefully, then you'll be able to interpret the most appropriate answer in multiple choice questions. This question is taken from CBSE website.
Now, in this type of question, see, uh, absolute function. So, Python's absolute function returns the absolute value of number passed to it. Right? So it returns always the positive value, even if you pass negative number inside the function. So absolute of 5 is 5, minus 3.1 is 3.1. So in other words, it returns only the positive value of the number which is being passed. Right. So what will be the value of this absolute, and in parenthesis it is given 3 minus absolute of minus 10. Now in this case, don't be in hurry. Look carefully the parenthesis, right? Or and you also know that absolute function returns the positive value. This is also mentioned, shown through the example. So now if we see carefully the parentheses, so see the innermost parentheses are resolved first, always. So if we see absolute of minus 10 will give us 10, since एब्सोल्यूट का काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करना. सो -10 का हो गया 10. नाउ इनसाइड पैरेंथेसिस, दैट इज द आउटर पैरेंथेसिस, वी हैव 3 minus 10, so it would be -7. और फिर -7 का एब्सोल्यूट करेंगे तो विल बिकम +7, so 7. So if you see, if you read this carefully, go through the question carefully, uh, so the you will get the correct answer, 7. Now next question. So which of these statements about text and binary file is true, right? So you know that in text file we always have characters, and in binary files we do have bits. So data is present in the form of bits, zeros and one, right? Now, if we know this thing, that text means that the characters and binary means the bits, which is very basic thing which everybody knows in general also. So you will be able to interpret the correct, the most appropriate answer. Now let us read the options. So one, a text file has the same number of characters in each line, unlike a binary file. See, binary file contains bits. So, of course, in binary file also, we shall have equal number. We may have equal number of bits in each line, right? And text file can also contain equal number of characters in each line. So it has the same number of characters in each line, unlike a binary file. No, in binary file also we may have equal number of bits, right? And binary file does not contain characters. So this is not true. So now let us move to next option. Text file has special end of file character, unlike a binary file. So we know that in the end of file we do have end of file character. So but in binary file the data appears in that binary format. So characters are not there. So end of file character is also not there, right? So this seems to be correct, B option. Now let us read other options also, then we shall see which is the most appropriate answer. तो बाइनरी फाइल में तो आपका डेटा प्रेजेंट होता है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वो कंप्यूटर मेमोरी में होता है. तो वहां पर इसलिए, एंड इफ यू ट्राई टू ओपन इट यू वोंट बी एबल टू रीड द डेटा. तो end of file character is not there in binary file. HTML file is an example of a text file, hypertext markup language. So, and while a CSV file is an example of binary file. CSV, you know, comma separated values. So, it's not a binary file, right? So, this is also false. In D option, every character in a text file can occur in binary file, but the reverse is not true. So, uh, so the characters are not there in binary file. So this is false, right? So every character in a text file can occur in binary file. So characters cannot occur in binary file. So this is also false. So B option seems to be most appropriate.
Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you, sir. Now, if we see the next question, so the main point is that read the question carefully, at least twice, thrice if possible, and also read the options very carefully. Since most of the times answer is present in either in the question or in the options itself, right? तो ज़्यादातर बार आपको क्वेश्चन और ऑप्शन से ही आंसर आप यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट, right? So, uh, in this question, so all these questions so far we have seen, they require analytical skills and knowledge also, right? So, how carefully you read, how focused you are, so all that matters. Now, here in this figure, we see that this is the directory structure given to us. So the main directory is school directory, and inside school directory we have three subdirectories: academics, examination, sports. In academics we have the file syllabus. In examination result, in sports achievement, right? So suppose root directory and present working directory are the same. So what will be the absolute path of the file syllabus.jpg? Now absolute path. So what is absolute path? It's a complete path that from your start of the actual file uh, to the that directory or the file. And relative path is defined as path related to the present working directory. ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें, आपको सिलेबस का पाथ देखना है फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक्चुअल डायरेक्टरी, राइट? तो स्कूल से ही स्टार्ट होगा. स्कूल इज द एट द अपर मोस्ट पोजिशन, इज द मेन डायरेक्टरी हेयर, और बाकी इसके सब डायरेक्टरीज हैं. तो स्कूल से स्टार्ट होगा. नाउ वी कैन सी ऑल ऑप्शंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल इन द पाथ. यू हैव टू गो टू रीच टू सिलेबस. तो स्कूल के बाद आप कहाँ जाएंगे? एकेडमिक्स में, राइट? क्योंकि सिलेबस एकेडमिक्स में है. तो फर्स्ट ऑप्शन स्कूल देन syllabus डॉट जेपीजी इज रॉन्ग, क्योंकि यू कैन नॉट स्किप एनी डायरेक्टरी और फाइल that comes in the path, right, while reaching to the to your destination. So A option is will not work, right? B. अब बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यस, पाथ इज गिवन दैट फ्रॉम स्कूल, स्कूल स्लैश एकेडमिक्स, मतलब इनसाइड स्कूल वी हैव एकेडमिक्स एंड इनसाइड एकेडमिक्स वी हैव सिलेबस. तो दिस इज करेक्ट, राइट? तो ये पाथ करेक्ट है. अब थर्ड देखें तो वी हैव एकेडमिक्स इनसाइड स्कूल, और उसके बाद दो डॉट्स हैं. तो दो डॉट्स मतलब वी मे हैव सम डायरेक्टरी और फाइल्स in this path. So, but we don't have actually, right, in the figure. If we see the figure, academics में ही syllabus है. So this two dots will make this option wrong. D में आपका है स्कूल में एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में we have syllabus. So no, examination में we have result, right? So B is the most appropriate answer. So if you know, the absolute path starts from the root directory or the actual directory, and but your relative path starts from current working directory, then you'll be able to attempt the answer. और वैसे इसमें अगर if you see the options carefully, वो present working directory वाला तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया. सभी स्कूल्स से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी एक्चुअल डायरेक्टरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो विच ऑल्सो शोज यू, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो मेन डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, क्योंकि सभी ऑप्शंस मेन डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रही हैं. तो आपको तो पाथ चेक करना है कि पाथ वेयर द पाथ इज करेक्ट. सो इन बी ऑप्शन इट्स करेक्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर आंसर इज प्रेजेंट either in the options or in the question. Now see, which of the following is not
a type of cyber crime. Okay. Now it's a crime. So we are talking about crime here, right? Which is not used for safety purpose, is the opposite uh, of safety. So first option is data theft. So theft. So stealing something is a crime, right? So this cannot be the answer. Cyber crime, since the crime is related to the cyberspace, that is the internet world. So we shall talk. So it is a this is named as cyber crime, right? तो साइबर क्राइम की बात होगी तो डेटा ही स्टील करेंगे, राइट? सो नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. क्वेश्चन में पूछा कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, तो डेटा थेफ्ट कैन नॉट बी द आंसर. नेक्स्ट चलें तो फोर्जरी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स. सो फोर्जरी इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो इट्स अ क्राइम, सो इट कैन नॉट बी द आंसर. Damage to data and system. So doing damaging something is also not the right thing, is not a good thing, right? So to data, to systems, or to the all physical devices which are being present there. So hardware or software devices, so making any damage to them is also a crime. Now, D option, if we see, installing antivirus for protection. So this is for safety purpose, for device safety only. It won't harm the device, right? So it cannot be a crime. So if we see, then these four options, so D is found to be the most appropriate option or the correct one. So all these questions are from CBSE website, as you can see. A link is also there mentioned. Now, next, dash is the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. Right? So you are stealing work or ideas of someone and then passing it to some other person, right? So if we see the option, so uh, plagiarism. So plagiarism is the same thing that we try to copy work or idea of someone. Now let us see other options also. Second, copyright. So copyright term is used uh, in case of giving protection to any type of work. Similarly, patent is also this term is also used when we need to when we give protection to some invention or some new work, right? So patent. So copyright and patent are used in terms of protection. So plagiarism is the all of the above cannot be possible since copyright and patent are wrong. So plagiarism is the most appropriate answer. So if you know even copyright and patent, then also you'll be able to interpret plagiarism if you don't know directly the definition of plagiarism. Legal and regulatory aspects of the internet refer to. So, so the aspects which control so something so regulate something, right? Here we are talking about internet. So if you see cyberspace, so cyberspace is the whole world, internet world, right? So cybercrime. So either we have so those legal rules or those lawsuits should be called as like cyber law or something like that. But that option is not there, right? So cyber crime cannot be possible because that crime words does not match with the law, rules, regulations. Similarly, space word that does not match with laws, rules, regulations. A criminal law. So we are talking about cyberspace. So how criminal law will be applied to it, right? IT Act. Yes, if we see, then uh, this is if we use our analytical skills, then we shall say कि IT Act. Act also contains rules, regulations. So IT Act
is the most appropriate answer. So now case study based multiple choice questions. So here we may have these type of questions also in exam. So where a case is given and on the basis of that case, questions MCQs are there. Now see this question. A school in Delhi uses database management system to store student details. The school maintains a database school record under which there are two tables, one student table, another stu library table. So the names are student and stu library of the tables. Student table maintains general details about every student enrolled in school, and the structure is also given. So we have these fields: to ID. ID always contain unique values like roll numbers, right? And stu name, stu address, stu father name. So these are other fields present in the table. And stu library. So in stu library table, we have fields like book ID, stu ID, book ID, क्योंकि this table stores what details of the issued books. Book ID is the unique identification number issued to each book, and this can be interpreted from this line कि book ID इसका primary key होगा, क्योंकि it contains unique value. It is said unique identification number issued to each book, right? Or minimum issue duration of a book is 1 day. So minimum for at least 1 day the book will be issued. So not before 24 hours the book cannot be returned. This means, right? तो बुक आईडी इसमें प्राइमरी की बनेगा विच शेल कंटेन यूनिक वैल्यू, और उसमें स्टू आईडी बनेगा. So this is the structure given. Now see the question. 1. Identify the SQL query which displays the data of stu library table in ascending order of student ID. So if you see the options, it is said that identify SQL query which displays the data of stu library table in ascending order of student ID. So all the options are similar. They start from the same words. Select star. Select star means all those tuples or records from stu library, right? Now these options are, the difference lies here at the end. कि order by book ID, order by stu ID, order by stu ID, ascending, descending, right? तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें ये बोला है which displays the data of stu library table in ascending order of student ID. ठीक है, student ID refers to the stu ID उसका रिप्रेजेंटेशन है. तो और असेंडिंग ऑर्डर भी, तो बाकी सब तो सेम है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, टेबल का नाम भी सेम है इन ऑल दी ऑप्शंस. ऑर्डर बाय, अब असेंडिंग ऑर्डर, इफ एज वी नो, अगर हम असेंडिंग लिखते हैं तो डेफिनेटली द ऑप्शंस विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑल दी वैल्यूज. और अगर नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑल्सो दैट वैल्यूज विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है. ओके, एंड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. सो सेकंड एंड थर्ड both shall give you the records or tuples or the answer order by stu id in ascending order. तो अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन तो डी में हमारे पास 2 and 3 है, विल डिस्प्ले द डिजायर्ड. ए में 1 और 4 है, सो विच इज नॉट पॉसिबल. वो बुक आईडी से है, क्योंकि क्लियर लिखा ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी, तो बुक आईडी कैन नॉट बी द आंसर. एंड सिमिलरली इन बी 1 and 2, तो सो बुक 1 आ गया, सो दैट इज रॉन्ग. और सी में 3 और 4 आ गया, तो बोथ असेंडिंग डिसेंडिंग. दिस मीन्स सो दैट इट इज अगेन रॉन्ग. So D is the most appropriate answer. Am I audible, sir?
Yes, Dr. Parul, you are. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So the primary key. Next question is primary key for stool library table is R. Now, primary key is what? Primary. So the main value, so that unique value, which the field which contains unique value with which any record or any tuple can be identified, that is primary key in the table. Like अब स्टू लाइब्रेरी में देखें कि प्राइमरी की क्या पॉसिबिलिटी हैं. अब इसमें बुक आईडी दिया है, एक कॉम्बिनेशन एक दिया है बुक आईडी, दूसरा कॉम्बिनेशन इज बुक आईडी टू आईडी, बुक आईडी इशू डेट. सो लेट अस गो बैक टू दैट स्ट्रक्चर. हमें इसमें देखना है स्कूल लाइब्रेरी में. सो एम आई ऑडिबल मैम? Yes, you are. Okay. So screen is also visible. So अब अगर हम देखें स्टू लाइब्रेरी में वी बुक आईडी आपका क्या है? न्यूमरिक, राइट. बुक आईडी इज न्यूमरिक, बट वन बुक, that one book, if we only book id cannot be the primary key, cannot identify every entry. Why? क्योंकि बुक आईडी में आपका जो है एक बुक एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी इशू हो सकती है. तो एक बुक के लिए, एक बुक आईडी के लिए वी कैन हैव सेवरल एंट्रीज, राइट. और एक बुक का एक से ज़्यादा इशू डेट भी हो सकता है, राइट. और अगर हम स्टू आईडी देखें तो स्टू आईडी में अनदर कॉम्बिनेशन स्टू, सो ओनली स्टू आईडी विल ऑल्सो नॉट वर्क क्योंकि दिस टेबल इज टू लाइब्रेरी. तो बुक आईडी एंड इशू डेट अगर हम देखें, दोनों का कॉम्बिनेशन देखें, तो एक बुक कैन बी इशूड ऑन वन डे, राइट, क्योंकि उसका मिनिमम ड्यूरेशन इज वन डे. तो एक बुक कैन बी इशूड फॉर मिनिमम वन डे. वो एक दिन से पहले कैन नॉट बी रिटर्न बैक, नहीं होगी. तो इसलिए बुक आईडी और इशू डेट का कॉम्बिनेशन कैन गिव यूनिक वैल्यू. So book ID and issue date would be the most appropriate answer. Third, अगर हम देखें, which of the following SQL query will fetch ID of those issued books which have not been returned? Now see the question carefully. Which have not been returned. So return date, we have to focus on return date. Return date is null, राइट, नॉट इशू डेट. तो क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ है तभी उसका रिटर्न डेट नल होगा. सो सेलेक्ट बुक आईडी फ्रॉम टू लाइब्रेरी वेयर रिटर्न डेट इज नल. अब पहला ऑप्शन देखें, सेलेक्ट बुक आईडी फ्रॉम टू लाइब्रेरी वेयर बुक आईडी इज नल. इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एवरी बुक वी हैव बुक आईडी. ऐसे ही वेयर टू आईडी इज नल इज नॉट ऑल्सो नॉट पॉसिबल. इशू डेट इज नल, नो. If a book is there, मतलब वो issue ही नहीं हुई, so where is the question of that returning then? So where return date is null, so issue तो हुई है but the return date is null, which has not been returned. So answer is D. Alternate key for student table will be two names, two contacts, two Aadhars, two class. So name, two students can have same name, can have same contact also, can also have the same class, but Aadhar would be unique. तो अगर हम alternate key की बात करें तो two Aadhar can be, this is a common sense based question. तो Aadhar जो है will work, right? Aadhar is the most appropriate answer. Which of the following SQL query will display dates on which number of issued books is greater than 5? Now see this question carefully. Number of issued books is greater than 5. पहला option is issued dates का है, right? So select issue date from two library group by issued date where count greater than 5. अब सभी में count greater than 5 है.
लेकिन वेयर द डिफरेंस लाइज देन, एक तो इशू डेट और रिटर्न डेट इज डिफरेंट, एंड वेयर एंड हैविंग क्लॉज इफ यू सी। तो अब इशू डेट के लिए भी वी हैव टू ऑप्शंस, वेयर का भी है और हैविंग का भी है। तो हमें इशू डेट के बेसिस पे काउंट करना है। इशू डेट के बेस पे काउंट शुड बी ग्रेटर देन 5, राइट। तो अगर हम देखें वेयर क्लॉज कहाँ यूज होता है, जब दो टेबल्स को ज्वाइन करना होता है। बट व्हेन वी यूज अ ग्रुप in a single table, then we use having clause, right? So having, पहले तो grouping होगी on the basis of issue date, और उसके बाद we have to filter on the basis of count, right? So uh, C is the most appropriate answer. Another question, that is case study based multiple choice question, right? So question is, Samarth is the hardware engineer of Happy School. He has been given the task of installing a network in the school lab, which has around 40 computers. So, uh, first question, so this is the case scenario given. First question, suggest the most suitable type of network topology he should use in order to maximize speed and make each computer independent of network breakdown. Now you know topology is the arrangement of that systems or computers, right? So name itself is saying bus topology. Bus topology में क्या होता है? Network connection is on the same cable. तो उसका जो फिगर है that explains the arrangement. एक ही केबल के ऊपर सारे कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, राइट, सेम केबल पर. स्टार टोपोलॉजी में सो सेवरल टाइप ऑफ केबल्स आर देयर इन स्टार टोपोलॉजी. स्टार की तरह होता है. इन सेंट्रल वी हैव अ सेंट्रल हब इन सेंटर, एंड देन वी हैव कंप्यूटर्स which are connected to central hub, right? और रिंग में there is no central hub, central computer. mesh में dedicated point to point link होता है. अब स्टार टोपोलॉजी अगर हम देखें, वेयर वन इज ऑल द कंप्यूटर्स विच आर अराउंड सेंट्रल हब, दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर. तो अगर कोई एक सिस्टम फेल भी हो जाएगा, देन इट विल नॉट ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क, एंड सिस्टम all systems are will keep on working, all other systems will keep on working, so if they are connected to central hub. और साथ में स्टार टोपोलॉजी also supports that several type of cables in the same network, right? तो और बस में कोई एक भी कंप्यूटर अगर खराब हो जाए तो विल डिस्टर्ब द एंटायर लाइन, राइट? तो similarly in rig, or bus does not support that several type of cables. So star topology is the most appropriate answer. मैश में डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, उसमें सेंट्रल सिस्टम तो होता नहीं, तो अगर एक कंप्यूटर भी खराब हो गया विल अफेक्ट दी अदर. लेकिन अगर सेंटर में एक कंप्यूटर है तो रेस्ट ऑफ द, if one computer fails, then rest of the system will keep on working. Now another question, in order to allow data transfer from server to only intended computers, which network device is required in the lab to connect the computers? Now data को transfer करना है from server to the intended recipients. Switch का काम होता है to transfer data to intended recipients, right? हब सभी को ट्रांसफर कर देता है और राउटर आपका ऑप्टिमम पाथ चूज करता है. एंड गेटवे, व्हेन वी यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, देन गेटवे डिवाइस इज बीइंग यूज्ड. तो आपको क्योंकि इंटेंडेड रेसिपिएंट के पास भेजना है तो स्विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. Now, during an international exchange program, the students need to connect to a classroom in Russia using Skype. Samarth helps the students to connect. Which type of network service is being used?
Students want to connect with that program, right? That program. They would like to um, uh, interact also. They would like to participate also in the class. So only messaging won't work in that case. uh, Whether that is instant messaging or email messaging, VoIP, voice over internet protocol. So if you are able to speak, you are able to listen also, then uh, this means that you are connected to the class and you are a participant there. So VoIP if we see is the most appropriate answer. क्योंकि www तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, so that is the network of your web. So it's not related with this question. So out of these three options, VoIP found to be most appropriate. Now, next question is that Samarth has asked students of class 7 to identify different parts of URL. Help the students to choose the correct option for label 1 and 2. So this is very simple. Everybody knows what is HTTPS protocol और ये domain name और आपका उसके बाद host. Just we write. So you see that B is the right answer. क्योंकि in B we have first protocol then domain. Right? So most of the time, your answer lies in the question itself, right? So if you read the question carefully, you'll be able to interpret the answer. So, I'd like to thank I'd like to thank Dr. Parul for her very lucid and systematic presentation. And I'll now hand over the floor to her to continue the session as moderator. Thank you, Parul. So thank you, ma'am, for your wonderful words. And in this session, so now we have Professor Tuteja with us for mathematics. And good morning, sir. So Professor Tuteja, uh, he's a professor in Department of Mathematics, Zakir Hussain College, University of Delhi, and also he's joint dean student welfare. And sir has done his doctorate in mathematics from University of Delhi and has experience of more than 25 years. Sir has done a lot of work in popularizing computer algebra system and R, and he is a Microsoft certified software developer and an associated member of Insurance Institute of India. Sir is a popular teacher and he was awarded the Distinguished Teacher Award by the University of Delhi while serving as Deputy Dean, Students Welfare, University of Delhi. And he has served in SGT University, Gurugram as Pro Vice Chancellor during 2018 to 2020. He has published several papers in national and international journals, and he is also the author of popular book Practical Mathematics Using Maxima. So we welcome you, sir. Now I invite Professor Tuteja for next subject. Over to you, sir. Thank you so much, Parul ma'am. Uh, it was an excellent, session. I was also engrossed in all questions, and in the questions were very interesting. I mean, these were the questions which everybody looks for. That has enhanced our knowledge as well. Uh, Now I'll take up some questions from mathematics as well. Before that, I'll tell students about the mock test which NTA has placed. So let me go step by step. Uh, I'll start with my presentation.
Is my presentation visible? Yes, sir. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you. So I begin that we are helping students in preparing them for Common University Entrance Test CUET UG 2022. I will be taking up something about I will be orienting about mathematics and applied mathematics paper. That's a 319. And if you wish to know more about this paper, students can log on to CUET website, which is actually cuet.samarth.ac.in. Suppose if I log in, what exactly I'm going to get, we'll see here. See, you get all kinds of information here, including the syllabus. If you click the syllabus, you will reach somewhere here where you can find syllabus of all the subjects. These are all discipline subjects. And if I pick up mathematics here, it's there. Mathematics is here. You can download it here from here and go through it. Then next is, if you see the website again, there are a few interesting things which we will be visiting again and again. Uh, on 25th of June, they have displayed the mock practice question for Common University Entrance Test. uh, ये मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर दिए हैं और इनको आप विजिट कर सकते हैं। ये मैं अभी दोबारा से इस पर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो वेबसाइट है 203.122.47.147:8094 ऑनलाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए वेबसाइट है। इसको हम लोग दोबारा से क्लिक करके अभी यहाँ पर आएंगे। देखिए ये इस तरह से क्लिक करने पर ये खुलती है। इसको भी हम लोग दोबारा से अभी वापस इस पर पहुंचते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो अबाउट द सिलेबस, अबाउट द क्वेश्चंस, अबाउट द पैटर्न, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर and important dates are also listed. You can see it here as well. I'll go back to my presentation. So it is actually for mathematics and applied mathematics. Now few students in class 12th, they pick up mathematics and few are there who pick up applied mathematics. सवाल ये उठता है कि क्या हम दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर अलग अलग आएगा? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें जो सेक्शंस हैं उसका आपको ध्यान रखना है। इसमें दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और सेक्शन बी के दो पार्ट्स हैं, B1 एंड B2। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप B1 पिकअप करेंगे, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप B2 पिकअप करेंगे, और डिटेल मैं आपको अभी देता जाता हूँ। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होंगे और ये कॉमन है, चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के हैं या मैथमेटिक्स के हैं, जिसके भी स्टूडेंट हैं आपको दोनों ही सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़े हैं उनको ये 15 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। क्या इनमें पूछा जाएगा ये अभी हम लोग आने वाली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। सो विच मीन्स दैट anyone who is appearing for mathematics paper or applied mathematics paper has to appear in this section A, which has 15 questions. There is no choices available in this, but in section B you will be getting 35 questions from mathematics, which we call it as B1. B1 में आपके 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको 25 के ही जवाब देने होंगे। और इसी तरह से B2 में 35 क्वेश्चन होंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स से होंगे, और आपको 25 के ही जवाब देने हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे चलना है और किस तरह से मैक्सिमम नंबर इसमें से लेने हैं।
तो सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको शायद क्लियर हो गया होगा. सेक्शन ए मीन्स दैट कंपल्सरी 15 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी मीन्स दैट कंपल्सरी यू हैव टू डू 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35. देखिए इस तरह से कुछ पिक्चर बन रही है जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगी कि मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 40 करने हैं उनको आउट ऑफ 50, जिनमें से ये टाइम इनके लिए अलॉटेड है 45 मिनट्स. आप जब सेक्शन ए करेंगे उसमें 15 क्वेश्चंस हैं. ये 15 क्वेश्चन दोनों स्टूडेंट चाहे वो मैथमेटिक्स के हों या अप्लाइड मैथमेटिक्स के, दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं उसका जवाब देंगे. और जो सेक्शन B1 है वो केवल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है और वो 25 क्वेश्चन उनको करने आउट ऑफ 35. और अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो B2 है सेक्शन 25 उनको भी करने हैं आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस. सो अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है. अगर आप इसे पिक करें, इसे क्लिक करें, ये मैं आपको ये हम लोग प्रेजेंटेशन भी शायद शेयर करेंगे, नहीं है तो आप एक फ़ोटो भी ले सकते हैं. ये समर्थ से ही मैंने निकाला है. इसमें अगर आप देखें तो सिलेबस ऑफ क्लास 12 दिया हुआ है. आप इसमें ये जो मैंने आपको समझाया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल्ड जानकारी भी दूंगा. So I'll come back to my presentation and here this you can download it for your reference कि आपको क्या क्या पढ़ना है. ये मोटे तौर पे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप सब सेक्शन वाइज देखना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लीजिए. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो भी आपको सिलेबस में दिया है वो सभी एनसीईआरटी में भी उपलब्ध है. तो एनसीईआरटी की किताब आपने कहाँ से लेनी है ये भी मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा. सो ये जो मैंने डिटेल्ड सिलेबस उतारा है ये यहाँ से मैंने लिया है मैथमेटिक्स का, जो मैं आपको दिखा रहा था. सो these links you can use. This is CUET.samarth.ac.in index.php site syllabus. अगर आप गूगल पे भी लिखते हैं CUT.samarth.ac.in, आगे एक वर्ड लिख देते हैं सिलेबस, ये आपको इस पॉइंट पर ले आएगा. So that is very easy to find out what kind of syllabus is there and what you have to prepare. So this is section A. Section A has mathematics, applied mathematics, and both the students will be appearing in the section A. अब जैसे मैंने इसमें दिया आपको अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में आपसे क्या पूछा जाएगा. अलजेब्रा में आपने मैट्रिसेस पढ़े हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं, आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इनके कुछ हम एग्जाम्पल भी लेंगे अभी. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, कैन यू डू इट और नॉट, this you must have learned in class 12. Then determinants, inverse of matrix, solving simultaneous equations using matrix. So this all you have to do in algebra. Then comes calculus. In calculus you must have done derivatives, higher order derivatives, tangents and normals, increasing and decreasing function, maxima and minima. So this you have done in class 12, and the best part is that this has been taught to both mathematics and applied mathematics students. So don't worry, whatever they have kept in the section A, it has been studied by both of the students, both stream students. Then I move to integration and its application. Here they must have studied indefinite integral of simple function, evaluation of indefinite integral, definite integral, application of integration as area under curve. Area under curve is a purely application of this, and you must have done. Then I come to differential equations, order and degree. You must understand what is difference between order and degree, how to find order of a differential equation, how to find a degree of a differential equation, and then how to solve different kinds of differential equation, including with variable separable method. So this you will be doing in differential equations. In probability distribution, you must know what are random variables and its probability distribution, expected value of a random variable,
variance and standard deviation, including binomial distribution. Finally, linear programming. In linear programming, you must have done mathematical formulation of linear programming problem. This is, I mean, you must understand what is linear programming problem, how do you define the linear programming problem, how do you find feasible and infeasible region, and how do you find optimum feasible solution. So you must know, basically they want you to know the to know that how to find solution, then how to find feasible solution, and how to find optimum feasible solution through graphical methods only. So this is what you must have done in class 12th. If you see section B1, mathematics, here uh, it is divided into different units. For example, you must have done relation and function, algebra. I'm not going into the details of it because you have the NCRT, so you can easily pick up that those who have done mathematics, they can see it, what they have done in calculus, both differential integral, vectors and three-dimensional geometry, linear programming, and probability. In section B2, wherein they are supposed to, they must have done this numbers, quantification and numerical applications, algebra, calculus, probability distribution, index numbers, inferential statistics, time-based data, financial mathematics, and linear programming. So little difference is there between B1 and B2, but those who have done B2, they should remain in B2. They should only pick up their B2 section, and those who have done mathematics, they should pick up the mathematics paper, that is B1. So mathematics and applied mathematics, where you will find the mock practice test. This I have already shown you. You can take a picture also of this particular slide. This seems to, it has all resources. So if you click this CUET I have already shown you that it will take you the website where you can find all kind of information. So this is the website where from where you land up on a resource where everything is given in the details. This particular link is meant for mock test. Now let's go there and find out what kind of things are there. See, take mock practice. I have clicked that. Earlier also I clicked it, so it is there also. I can remove it so that you have one copy. All right. So you can pick up server 1, server 2, server 3, server 4 many times. If the server 1 is not working, you can pick up from server 2 or server 3. You can check whichever server is working. They have given, in mathematics, they have given 85 questions. I don't know if it is working. Then let's see. Yeah, it is working. Take mock test online. This mock test is to familiarize the student about the process of CBT. Candidate can understand various process of CBT with available mock test. So आप इस पेज पे जब आप आ जाओगे, इस पेज पे आने पे ये आपसे पूछेगा कि आप किस एग्जाम के लिए मॉक देना चाहते हो. आप CUET सेलेक्ट करो. कौन सा ईयर, अभी फिलहाल ऑल ईयर ही आपको ऑप्शन मिल रहा है. मंथ में भी आपको ऑल ही मिल रहा है. आप इसे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट सब्जेक्ट. यहाँ पर सभी पेपर लिस्टेड हैं. मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, सो मैं मैथमेटिक्स यहाँ से पिक कर लेता हूँ. और अब ये मुझसे पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं. मान लीजिए मैंने इंग्लिश ले लिया और स्टार्ट टेस्ट को मैंने क्लिक किया. देखिए ये सामने आपके खुल गया. इसको मैं डिटेल में भी आपको उसमें समझाऊंगा. सिर्फ मैं आपको इसलिए यहाँ पर लाया हूँ कि आप लाइव देख सके. उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन है वो अपनी प्रेजेंटेशन में ही करेंगे. टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैथमेटिक्स पेपर इज 45 मिनट्स. इस क्वेश्चन पेपर में बहुत इंटरेस्टिंग है. आप कैसे पूरा समझ पाएंगे कि आपका पेपर कैसा चल रहा है, ये आज हम लोग इसी क्लास में समझ लेंगे. देखिए मैथमेटिक्स इस MCQ में आपको ये समझना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है, क्योंकि आपको इसमें अवेलेबल हैं बहुत सारे ऑप्शंस. आप जब चॉइसेस आपको अवेलेबल हैं और किसी चॉइस को आप छोड़ना चाहते हैं तो उस चॉइस को आप ऐसे मत छोड़िए कि बिना देखे हुए छोड़ दिया. आप देख लीजिए, अगर आपको उसमें आंसर नहीं आ रहा है
तब आप उसको छोड़िए। या आपको लगता है कि आपको आंसर आता है, मैं थोड़ा और सोचूंगा, आप उसको रिव्यू में डाल दीजिए। वो आपको अलग अलग कलर के पैलेट्स दिखाएगा। ये जो व्हाइट पैलेट है, इसका मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन अभी तक पढ़ा ही नहीं है। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। रेड का मतलब है आप पढ़ तो चुके हैं लेकिन आपने आंसर नहीं दिया है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आप दिमाग में रखिए, या तो आपको नहीं आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी उस पर संशय है तो आप उस पर रिव्यू के लिए लगाइए, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आप आंसर कर देते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। एंड नंबर फोर्थ है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो कलर है आपका, इस कलर के अंदर एक ग्रीन कलर नहीं है। ये जो बैंगनी टाइप का कलर है, इसके अंदर ग्रीन नहीं है। ग्रीन अगर है तो इसका मतलब आपने आंसर तो लगा दिया लेकिन आपको इस पे शक है। अभी शक या शुबा है कि यार एक बार मैं और चेक कर लूं। लेकिन अगर आपने यू हैव नॉट, आपने आंसर नहीं किया और सिर्फ इसको रिव्यू में डाल दिया, किसी मैं बाद में देखूंगा, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे साथ अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसकी क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आप उसको रिव्यू में डाल दीजिए। एटलीस्ट आप ये नहीं करेंगे कि यू हैव नॉट आंसर्ड में आप नहीं डालेंगे कि भाई मुझे आंसर देना ही नहीं है। आपके दिमाग में रहेगा कि ये मैं दे सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। सो इस तरह से उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है ये 5 कलर्स के साथ। आप आसानी से इनको यूज कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मॉक टेस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको इसके डिटेल्स और भी समझाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। वहाँ जाके समझने में हो सकता है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है, अगर इन बातों को वहाँ समझेंगे हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए, ये मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देन आई विल टेक यू टू माई स्लाइड शो। देखिए इसमें क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री। ये इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हैं और ये इन्होंने इसके आगे उसकी डिग्री दी है। आपसे ये कह रहे हैं कि हर डिग्री, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप मैच बताइए। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला कैसे जाता है। लेट अस सी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है नंबर 1 ए। अब अगर आपको मालूम है कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है, डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आफ्टर making consider after removing these radicals, which means that we should have a polynomial equation. So ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे हटेगी। यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि रेज टू द पावर 6 दोनों साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि ये a2 हो, a2 है। बी में देखिए यहाँ पर 1/4 है, इसका मतलब मुझे पावर 4 करनी पड़ेगी। हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 3 है और 3 की पावर 4 आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री 4 होने की उम्मीद है, यानी कि ये B4 दिख रहा है मुझे। A2 B4 अभी तक लाइन में आ रहा है। इस तरह से C को देखते हैं। C इज क्लियरली, दिस इज C, y double dash plus e raised to the power y is equal to 0. So y double dash is there, so it gives you the degree 1, because the degree, the power of y double dash is 1, and here the power of y double dash, which is the highest order differential, is 3. So it has D3. The answer, most feasible answer seems to be 4. All right. So अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा राइट साइड क्वेश्चन पैलेट समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। क्वेश्चन पैलेट में इधर यहाँ पर ये मॉक है, तो मॉक में इन्होंने 85 दिए और हमें कितने वहाँ पर आएंगे, हम लोग से वो कितने पूछेंगे, 35 + 15, यानी कि टोटल सवाल वहाँ पर जो होंगे वो 50 सवाल होंगे, 85 नहीं होंगे। ये मॉक में इन्होंने इस तरह से दिया। नाउ लेट अस सी this. This is something very interesting and it will help you throughout in all exams, all CUT exams. देखिए इस पे क्या दिखा रहा है, 85 क्वेश्चन हैं, आपने अभी तक एक भी विजिट नहीं किया है, क्योंकि आपने किसी पे मार्क नहीं किया, नॉट आंसर्ड। अगर मैं
दूसरे क्वेश्चन में चला जाऊंगा तो पहला वाला रेड हो जाएगा। अगर मैं उसको सवाल दे के आगे बढ़ूंगा तो वो आपका ग्रीन हो जाएगा। और अगर मैं रिव्यू करने के लिए डाल रहा हूँ तो मार्क फॉर रिव्यू इस तरह से 0 लिखा आएगा। और अगर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू करूंगा तो ये ग्रीन लगा देगा। सो लेट अस सी, मैंने कुछ करके भी देखे आपके लिए, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी रखे, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर करें। सो लेट अस सी, अगर मैं इसको आंसर में यहाँ देता हूँ। अच्छा, पहले इधर इसके बॉटम में भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। जब आप एक आंसर दे लेंगे 1 2 3 4, सपोज आपने 3 दिया, ऑल राइट, सपोज यू मार्क 3 एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, तो ये सेव हो जाएगा, आप अगले सवाल पे चले जाएंगे। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने आंसर दिया, उसके बाद आपने बोला नहीं नहीं ये आंसर नहीं है, आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, आप वापस इसको क्लियर करना चाहते हैं, आप क्लियर दबाइए। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, व्हेन यू से सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इट मींस दैट it is you must have answered it, so answered and marked for review आपके लिए यहाँ पर ये लगा देगा। so you will get all these hints and देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको किन 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक, क्या आपने सभी 50 सवाल पे विजिट किया या नहीं किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप इस पे हमेशा ट्रैकर रखेंगे कि आप सभी 50 सवालों को देखें। दूसरा, कितने सवालों को आपने जवाब नहीं दिया है, वो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आपको रेड दिखाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रेड रखिए और दिमाग में रखिए कि आपने 3 आपको आता ही नहीं है, इसलिए वो रेड है। और आंसर्ड कितने किए, यानी कि कुल मिलाकर आंसर्ड प्लस नॉन आंसर्ड जो है आपके कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। 15 प्लस 25 30 40 40 होने चाहिए। आउट ऑफ 50 40 आपके आंसर्ड होने चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर्ड में 40 हों और नॉट आंसर्ड में आपके 10 आएंगे ऑटोमेटिकली, अगर ये 50 सवाल होंगे। सो इससे आपका ट्रैकर रहेगा। और टोटल यहाँ पर सवाल 50 दिए होंगे, और ध्यान रखिएगा कि इन 50 के 50 आप विजिट जरूर करें, उसको छोड़े नहीं। इसका सम आंसर्ड प्लस नॉट आंसर्ड का यहाँ पर आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर हो सकता है आपको सारे के सारे सवाल ना आते हो, मान लीजिए आपको 50 में से 38 ही आ रहे हैं, 40 नहीं आ रहे, तो आंसर्ड आपके 38 हो गए, नॉट आंसर्ड में आपके 12 चले जाएंगे, यानी कि 38 प्लस 12 50, ये आ जाएगा 85। 85 यहाँ पर इसलिए कि इसमें 85 दिए हुए, तो हमारे उसमें क्वेश्चन पेपर में ये आएगा। मार्क फॉर रिव्यू में और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये आपको देखिए एक ध्यान रखना, इसमें बहुत बारीक फर्क है। अगर आपने आंसर कर दिया और रिव्यू के लिए मार्क किया हुआ है, लेकिन आपका टाइम आउट हो गया, आपने छोड़ के चले गए, आपने बोला कि बस, अब वो रिव्यू के लिए मार्क था, लेकिन आपने उसको आंसर किया हुआ है, इसलिए वो इवैल्यूएट होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी शक एंड शुबा है कहीं पे भी, तो आप आंसर मत करिए, खाली मार्क्ड फॉर रिव्यू रख लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि एक बार आपने उसका आंसर दे दिया, तो वो आंसर लास्ट मोमेंट पे आपको अगर ज़रा सा भी लगा कि ये तो गलत हो सकता है, तो आपको जैसा कि मालूम ही है कि हर राइट क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आप बहुत सारे रिव्यू में डालेंगे, तो आपके हो सकता है आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू में डालेंगे, तो हो सकता है अगर गलतियां ज़्यादा करेंगे तो निगेटिव मार्क्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। वो कंडीशन को अवॉइड करिएगा। जिस पे आपको थोड़ा सा भी शुबा है, थोड़ा है, चलो मान लिया थोड़ा सा नहीं आ रहा है, तो लेकिन लग रहा है कि आंसर यही है, 99% आप श्योर हैं, आप आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। लेकिन जहां आपको लग रहा नहीं है 50-50 है या कुछ भी परसेंटेज है जो कि खतरनाक हो सकती है, तो मार्क फॉर रिव्यू डालिए, ये वाला डालिए, उसमें ग्रीन मत डालिएगा। ग्रीन का मतलब है कि आप इवैल्यूएशन में क्वेश्चन को डाल रहे हैं। इज दैट ओके? सो लेट अस ट्राई दिस ऑन द बोर्ड। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एंड देन वी विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो आई सेड लेट अस पुट आंसर 4 और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट मैंने किया।
शायद मेरे यहाँ कंप्यूटर स्लो है, लेकिन ये क्या आउटपुट आती है ये मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन से दिखा दूंगा। इसको अभी हम लोग छोड़ के वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सेव एंड I think this some slow, it is slow, no problem. I will take you from here. Before that, let us see where you can find all kinds of resources. By the time वो हो सकता है अगर स्लो इंटरनेट तो आ जाएगा। अगर आप सीबीएसई के रिसोर्सेज देखना चाहते हैं तो आप सीबीएसई की academic.nic ये वेबसाइट है, इस पे जाइए। ये देखिए सीबीएसई क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, आप इसको क्लिक करिए और आपको बहुत सारे रिलेशन एंड फंक्शन, आपको बहुत सारे यहाँ सवाल मिल जाएंगे। इट्स ए गुड क्वेश्चन बैंक, यू कैन एटलीस्ट गो थ्रू इट एंड गेट acquainted yourself that what kind of questions they can ask. Simple questions but good questions, at least you can practice. So एक रिसोर्स ये है आपके लिए कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पे देखिए, और दूसरा ये अभी भी घूम रहा है कुछ, नेवर माइंड, देयर इज इट में समटाइम्स इट बिकम स्लो। रिसोर्सेज एट दीक्षा, ये दीक्षा वेबसाइट आपके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है। जैसा कि पहले वाले सेशन में भी आपको बताया गया कि दीक्षा वेबसाइट पे आप ज़रूर एक बार ब्राउज करिए। देखिए यहाँ पर एक्सप्लोर दीक्षा, यहाँ पर आपको जो अदर रिसोर्सेज हैं जैसे एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, एनआईओएस है और अदर स्टेट्स की है। फॉर एग्जांपल if I click this NCERT, so you will be taken to the website of NCERT. Here you can say look for digital textbooks. You can find the digital textbook. It will ask several questions, then it will give you the book. For example, आप यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करिए, आप यहाँ से मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास सेलेक्ट करिए, आपको ये क्लास 12th की जो भी किताब आपने देखनी है वो आपको ये दिखाते जाएगा। सो आई विल क्लोज सम ऑफ द लिंक्स हियर। इसी तरह से देखिए एनसीईआरटी का मैंने ये खोल के रखा है आपके लिए। मान लीजिए एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो क्लास 12th की मुझे मैथमेटिक्स की बुक चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट हियर सब्जेक्ट class 12th. Here I taken class 12th, and then subject, say I take mathematics, and then if you want it in English you can take mathematics 1 2. If you want it in Hindi you can take this and mathematics part 1, and then you click, so you get mathematics. Here you see you get chapter wise, this is part 1. All right, now you can see chapter 1 2 3 and then appendices are there. Say I pick up chapter 1. Chapter 1 is relations and functions, so you can go through this relation and function, and I'll suggest that you should not leave the definitions and at least examples. These definitions, what are the different types of relations, you must read it because they build your concept. I have seen the question paper, this mock question paper. Mostly questions are based on definitions, and very less computations are there. So they also want that you should have a deep concept of this. So what are the different types of functions they have defined here? Even if you go through these definitions and all, this will build up your conceptual concepts. So NCRT, CBSC, all this you can go. Yeah, now I'm back here. See, uh, being this little slower my system here. So anyway, question number 1 I have already attempted, and green does not mean that the question is right. Okay, don't take it. Green means the right and red means it is wrong. Nothing like it. Normally that is a color it is being used everywhere in all websites, but here green means that it has been answered. Now it is right or wrong, that result will, they will send you the result or they'll declare the result. That's a different thing. So
now you can move to question number 2. You can answer is the degree of the differential equation of the family of curve is this, where C is the parameter. So the degree of the differential equation of the family of curve represented by this, where C is the parameter. Now if you want to find out this, you say you don't want to answer it, okay, you don't want to answer it. So what you can do is you can mark for review and move to the next. Again, it may take time. No, it has not taken time. Yes. Now you see, question number 1 is green. Question number 2 is this, which means that I have marked for review. I have not answered it. मुझे आंसर नहीं आता था, इसलिए मैंने ऐसा किया. अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस, अब मुझे ये लग रहा है इसका आंसर हो सकता है 5/3 हो, 1 हो, कुछ एक मुझे आइडिया है, लेकिन मुझे पक्का नहीं है, श्योर नहीं हूँ मैं कि क्या करूँ. सो लेट मी पुट से आई टेक नंबर 3, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आंसर है या नहीं है. एक ऐसे ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. आई हैव नॉट कंप्यूटेड इट. So what I will do, I'll save and this. Now you see the 3 different this, 1, 2 and 3. 2 means that I have put it for review. 3 says that you have marked the answer and it will be evaluated if you leave it at such. So let us see here. 1 + 1 + 1 कितने हो गए टोटल? हमने 3 अटेम्प्ट किए हैं. एक को हमने आंसर किया, एक को हमने मार्क फॉर रिव्यू डाला और एक को हमने आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू डाल दिया है. तो इस तरह से मेरे 3 क्वेश्चन आंसर हो गए. टोटल 82 थे, इसमें 82 + 3 85 हो गए. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर ख़त्म करने वाले हो तो इन दोनों को कंट्रोल करना है. ये वाला तो फिर आपको मार्क्स लेगा या देगा, लेकिन ये तो इवैल्यूएशन में ही नहीं जाएगा. तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आपने 2 ही आंसर दिए जो इवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं. अब आई बात क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मुझे आंसर ही नहीं करना है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ. प्लीज सेलेक्ट द आंसर, ये बोल रहा है. तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स. अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने छोड़ दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 पे चला गया. आप ऐसे भी जा सकते हो, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है. इट में टेक टाइम. ले लिया इसने, देखिए. अब ये 4 को ये छोड़ आया है, इसका मतलब ये कि 4 आपने विजिट नहीं किया है, आपने इसको आंसर नहीं किया है. अब आप 5 पे सीधा आ गए हैं. 5 इस टाइम नॉट आंसर चल रहा है और आपके सामने है. I think this board is absolutely clear to you how to handle this board, and we are expecting that same kind of board you are going to get there. अगर आप कोई क्लियर करना चाहते हैं रिस्पॉन्स, लेट अस सी कि आपने 3 को ये आपने क्लियर करना है रिस्पॉन्स, आपको नहीं मज़ा आ रहा है तो क्लियर रिस्पॉन्स दबाइए. आई एम सो सॉरी दैट दिस बोर्ड इज लिटिल स्लोअर एट माई एंड, बट इट विल क्लियर इट. एनीवे, ये जब तक क्लियर होता है हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं. तो अभी मैंने आपको CBSE के रिसोर्सेज बताए, दीक्षा के रिसोर्सेज बताए. आप वहाँ से जाके काफ़ी कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सो मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की जनरल इंस्ट्रक्शन, एक्चुअली दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर एवरी पेपर. There are 5 options available to you. You have not visited the question yet. Even if you jump some question, it will put like this: you have not answered the question, red. You have answered the question is green. This means that you have not answered the question but have marked the question for review, and the answer and mark for review will be considered for evaluation. So green means these are the marks you are going to get. इस ग्रीन में और इस ग्रीन में इवैल्यूएशन होगी, बाकी कलर्स में कहीं इवैल्यूएशन नहीं है. सो आपको टोटल मिला के ग्रीन देखना चाहिए कि 15 इधर, 15 इधर होने चाहिए सेक्शन ए में, और उधर आपके टोटल 25 होने चाहिए. सो लेट अस सी दिस. यही बोर्ड में आपको मैंने एक पिक्चर इसीलिए रख ली थी कि आपको अगर बोर्ड उस टाइम नहीं चले, स्लो चले, तो कम से कम हमें
आइडिया हो कि क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से ही आएगा, एक जस्ट ए क्विक रिवीजन, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपके सारे लिस्टिंग होंगे क्वेश्चंस की, और ये लेजेंड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके नीचे अगर हम देखें तो कैसा दिखाई देगा, इसके नीचे इस तरह से दिखाई देगा, 2 1 2 3 4, आप ऑप्शन चूज करेंगे, आपका सिलेक्टेड आंसर 2 दिखाएगा, सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स, ये मैंने सारे आपको करके भी दिखाए हैं। ये रेड इसलिए दिखा रहा है कि मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद मैंने आंसर नहीं किया है, इसलिए ये रेड हो गए कि मैंने इन पे विजिट किया है। मैं आपको यही सवाल कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पिक किया, उसको मैंने सॉल्व किया, आपके लिए लेके आया, ऐसे ही मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पिक कर लिए। इसमें आपको नॉट आंसर इसीलिए दिखा रहा है कि आपने पढ़े हैं लेकिन जवाब नहीं दिया। ये 45वां क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, 46 मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ और आगे चला जाता हूँ तो वो रेड हो जाएगा कि आप पढ़ के आगे निकल गए। देखिए, सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे सवाल कर रहे थे, मैंने आपको आंसर भी बताया, एक्चुअली उसकी थ्योरी ये मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। द डिफरेंशियल इक्वेशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव present in the equation, and the degrees of the differential equation is represented by the power of the highest order derivative in the differential equation. The differential equation must be a polynomial equation in the derivatives of the degree to be defined. Let us go back to this. So if you see the d1, here in d1 highest order derivative क्या है 2, इसके ऊपर पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हुई 3। हमें ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, इसकी पावर नहीं देखनी है, ये इससे ऊपर एक ऑर्डर वाला है, ये सिंगल ऑर्डर है, ये डबल इसका सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सो फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन we will see that the highest order differential coefficient is this one and the power is 3, so it is the degree of the differential equation because it is the power of the highest order uh, differential coefficient. Now, if you see here, here also, had it been here cos sin होता तो शायद हम बोल देते कि भाई यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है इसकी डिग्री निकालना, लेकिन e रेज टू द पावर y है, e रेज टू द पावर y है, तो इसको आप एज सच रहने दोगे, y डबल डैश देखोगे, y डबल डैश अगर आप देखोगे तो y डबल डैश होने से हाईएस्ट ऑर्डर इसमें क्या हो गया आपका सेकंड ऑर्डर है, इसकी पावर क्या है 1। नाउ इफ यू विजिट हियर इट इज रेज टू द पावर 1/4, वी कैन नॉट कंप्यूट दैट कि y ट्रिपल ऑर्डर इसका ऑर्डर 3 है, लेकिन ऑर्डर 3 है उसकी पावर 1 है, बट एज सच आपको नहीं देखना है, इस रेडिकल को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि रेज टू द पावर 4 करना पड़ेगा। So y3 third order differential coefficient raised to the power 4 gives you the order, gives you the degree 4. So answer is B4. तो B4 आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ A3 दिखा रहा है, A3 का मतलब ये क्यूब कह रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर अगर आप क्यूबिक इक्वेशन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट को भी क्लियर करना है, तो यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा, इसलिए आंसर इसका 4 होगा। एनीवे, this all is concept which you know, and you can always revise it, that what is the difference between order and degree and how to find order and degree of a differential equation. Let us move to next question. अगेन सी, देखिए मैंने 1 का आंसर लिख दिया, ठीक है, 1 का मैंने लिख दिया। अब मैंने आपके लिए रैंडमली 27 क्वेश्चन नंबर लिया, तो ये 27 क्वेश्चन नंबर है, ये कुछ मिसप्रिंट है इसमें, इसको जस्ट फॉरगेट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम? Now you know that what is a Rolle's theorem, how do you define a Rolle's theorem. So you must know this concept of Rolle's theorem, that if f is a function defined over a closed interval ab, ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, f is a continuous on closed interval ab and differentiable on the open interval ab such that fa is equal to fb, then f dash x is equal to 0 for some x with a less than x is equal to b. That
इफ एफ फंक्शन एफ, तो हम मान के चलते हैं कि वो डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो देखिए समथिंग लाइक दिस आई कैन टेल यू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। at point A and at point B, you see the value of FA is this much, ये FA है total point A पे, और B पे ये FB है, और FA और FB दोनों equal हैं। तब वो कहता है कि अगर FA is equal to FB है, तो A और B के बीच में एक point होगा, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर ये इन्होंने इस तरह से बनाया, तो बीच में मतलब इन बिटवीन, नॉट समथिंग लाइक इट इज इन द सेंटर ऑफ दिस, इट इज समवेयर इन बिटवीन। सो in between A and B, in the open interval AB, which means that excluding the point A and B, you can find a point C such that the derivative is 0. Now what does it mean the derivative is 0? Derivative is 0 मतलब अगर आप उस ग्राफ पे टेंजेंट खींचेंगे, तो एफ, ये इसका जो टेंजेंट होगा, स्लोप होता है एफ डैश एक्स, उस पॉइंट पे वो जीरो होगा। इसका मतलब उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सो दैट इज द concept of Rolle's theorem, and here it is asking us in this question, it is asking us which of the following given function satisfies the condition of Rolle's theorem. Now, in all these options, you have a polynomial kind of thing, x, x square, x cube, x4 मोनोमियल है, और वो भी x की पावर्स हैं। So we expect that they all are continuous function, there cannot be any break. So f is well defined function। पहली बात तो ये, जब continuous ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब आई बात, तीसरी बात हमें ये देखनी चाहिए कि f of 1 is equal to f of 2 है क्या इसमें? What is f of 1? f of 1 is 1. What is f of 2? f of 2 is 2. So f1 is not equal to f2. At the end point हमने बोला ना fa is equal to fb होना चाहिए, तो यहाँ पर f1 is not equal to f2. Therefore this function does not satisfy Rolle's theorem. Now I move to this number 2. F of x is equal to x square. X belongs to -1 and 1. If I put -1 here, -1 ka square is 1. So f of -1 is 1 and f of 1 is again 1. So which means that f of -1 is equal to f of 1, which means that here it satisfies the Rolle's theorem, because whether you put -1 here or you put 1 here, the value of the function is 1. So which means this 2 is satisfying the Rolle's theorem. Let us see the third one also. We cannot leave it as such. So f of होगा नहीं, मुझे मालूम है नहीं होगा, मैं टाइम चाहूँ तो ना लगाऊं इस पे। जब मुझे पहला आंसर मिल गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन एक आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि f of -1 क्या है? f of -1 यहाँ पर -1 है। f of 2 क्या है? 8 है। दोनों इक्वल नहीं है। So f of -1 is not equal to f of 2। और जल्दी से ये देख लेते हैं, f of 0 क्या है? f of 0 0 है। f of 1 1 है। यहाँ पर 1 पुट करूँगा, 1⁴ is 1। सो अगेन यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली मुझे आंसर 2 मिल चुका है, इसलिए मैं इसे आंसर 2 मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 27। मैंने आंसर इसलिए नहीं किया कि आपको बताने के लिए कि ये मैंने अटेम्प्ट किया है, आंसर आपके साथ बैठ के वहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है जी, कर सकते हैं हम बाद में। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, this question is this is question number 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये मैंने रैंडमली लिया, ये सब रैंडमली मैंने क्वेश्चन कुछ उठाए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन आपके लिए मैंने उठाए और इनको सॉल्व किया। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग रेड हियर। The maximum value of the objective function z is equal to x plus y subject to the constraints x minus y is less than equal to -1, minus x plus y is less than equal to 0, x is greater than equal to y, y is greater than equal to 0, is 0, 1, 2, maximum value does not exist। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, वो है कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें। देखो
इसका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये क्या है. ये दिस इज कॉल्ड एज, इवन इफ यू हैव स्टडीड इन क्लास 12, दिस इज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इट हैज three parts. What are those three parts? First part, this is called as, it is actually objective function, जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि कहीं मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ कहीं मिनिमाइज करते हैं. So we have to optimize this function. In your terminology, either we maximize it or minimize it, subject to the constraints. देखिए यहाँ terminology भी इसने यूज की. These are constraints. इनको हम इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज जो भी हैं वो इक्वेशंस भी बोलते हैं इनको, एक कहने के लिए कि याद रखने के लिए ये कंस्ट्रेंट्स हो गए. और ये आपकी ये एक हम डिफाइन करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. एनएनआर भी बोलते हैं इनको, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस. ज़्यादातर आपके सवालों में नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जब आप बड़े हो जाएंगे हायर उसमें आएंगे तो ये हम इसको भी रिलैक्स करते हैं. बट फॉर यू it is non-negative restriction and they give you positive. You have to choose x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. So a linear programming problem has three parts: objective function, constraints, and your non-negative restriction. When you solve this constraints, you get solution. हम लोग जब सिलेबस में कर रहे थे, मैंने आपसे बोला था हम क्या पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में. वी स्टडी सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस का मतलब है कि आप x एंड y की वैल्यू इसमें से निकालिए. कैसे निकालेंगे? इनको इक्वालिटी मान के हम ग्राफिकल से निकालेंगे. मैं आपको भी समझाऊंगा. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे मिलते हैं इक्वेशंस, सॉल्यूशंस. And when we put this restriction also on them, that means we select only positive x and y, then it is called as feasible solutions. So solutions, when they satisfy this feasible solution, and उन feasible solutions में कुछ ही solution ऐसे होते हैं जो maximize करते हैं. उनको या एक होगा या बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं. दो नहीं होते हैं इसमें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो एक है या अनेक है इसमें. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन. याद रखने के लिए आप OFS कोड याद रखिए. पहला काम होता है कंस्ट्रेंट से सॉल्यूशन निकालना, दूसरा काम है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमारा काम है ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन निकालना. तो अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि OFS निकलवाने को कह रहा है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, या मैक्सिमम. पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. देखिए ग्राफ क्या आया. ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया. पहली इक्वेशन आपकी ये थी. ये ग्राफ ब्लू वाला है, वो रीजन ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जब हम x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 रहेंगे तो ये हमारा आपका ये रीजन आया कि ये वाली इक्वेशन जो है नंबर 1 इक्वेशन का ब्लू है, और नंबर 2 जो है वो ये वाली इक्वेशन कह रही है. NNR में अगर करेंगे तो वी हैव टू लुक ओनली इन द first quadrant. When x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, we have to concentrate only in the first quadrant. And in the first quadrant, they do not meet, they do not have any common region, so it does not have a solution. So maximum value does not exist. So आप इसको इस तरह से भी खत्म कर सकते हो कि देखिए ये जो पॉइंट है ना, एक अगर आप कहेंगे कि 0 भी तो हो रहा है सर, 0 इसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है. ये ब्लू वाली इक्वेशन को 0 minus 0 is less than equal to -1 is wrong. That is why it does not have a solution. So let us move to next question, and this question is from probability. देखिए पैटर्न, ये जो सवाल था, जो अभी हम लोगों ने अभी तक 3 सवाल किए, ये स्टैंड अलोन सवाल थे. स्टैंड अलोन मीन्स that you have some question here, you have answer here. Here you may have typically more than there are many answers in it that help you. Actually ये help करते हैं. अगर बहुत सारे हो, आपको इनमें से एक का नहीं पता चल रहा हो, तो आपको पता लग जाता है अरे यही वाला होगा, है ना. इस वाले में अगर आप देखें तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही उसका आंसर है. यहाँ पर अगर आप आए, इस वाले क्वेश्चन का देखिए फॉर्मेट इसने चेंज किया. ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की.
44 क्वेश्चन में क्या है, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 26 to 30। यहाँ नंबर गलत हो सकता है, ये 44 पे है तो हो सकता है कोई और नंबर हो। तो यहाँ पर इसने 5 क्वेश्चन आपको इसी के बेसिस पे दे दिए। सो वन सिंगल क्वेश्चन विच मीन्स दैट अगर आप जंपिंग करते हुए जा रहे हैं तो आपसे गलत हो सकता है, क्योंकि अगला सवाल 45 जो है वो इस वाले क्वेश्चन पे आधारित है, इसलिए आप जंप नहीं करेंगे जैसे मैंने करके दिखाया है, आपको लाइन से सवाल करने हैं। सो आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम से आई से हियर 44 to say 44 to 49 on the following case. Let X denotes the number of colleges where you will apply after your result. Px denotes the probability of getting admission in X number of colleges. It is given. ये probabilities दी हुई हैं। X is equal to xi, 1 सिंगल कॉलेज में होने की 2k है, 2 कॉलेजेस में होने की 6k है, 3 कॉलेज में होने की 3k है, 4 कॉलेजेस में एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी 2k है, where k is a positive constant. On the basis of the above information, so information is given here. Answer the following question. It may have number of questions. So whenever this kind of I'll say that compound questions are there, where you may have the next 4-5 questions depend upon this question, you have to understand that question. उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि उसके आधार पे ही 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अगले आने जा रहे हैं। हो सकता है अगर आप नहीं समझते हैं ठीक से तो लगातार आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सो ऐसा रिस्क मत लीजिए, आसान होते हैं, आप उसको समझ के करिए। तो ये इसने दिया कि द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेजेस, यानी कि इसकी ये बात कर रहा है एग्जैक्टली 2 कॉलेज। तो पहले देखिए 6 + 2 8, 8 + 3 11 और +2 13 के टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो k का आया 13, k इज इक्वल टू 1, विच मीन्स दैट k इज इक्वल टू 1/13। अब आप कोई भी निकलवा लीजिए मुझसे। प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेज 6/13, इसका आंसर 2 है। अगर वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग admission in only one college, so 2/13। probability of getting admission in less than 4 colleges, अगर मैं less than 4 कॉलेज बोलूंगा तो 3 2 1 सब जोड़ लूंगा, यानी कि 6 + 3 + 2 कितना हो गया 11, 11/13 इज द आंसर, लेस देन 4 कॉलेजेस। अगर हम बोलते हैं ग्रेटर देन 2 कॉलेजेस, देखिए वही सब क्वेश्चन थे आगे, आइडिया यही है मेरा, मैंने भी नहीं देखे बट आइडिया यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो अगर मैंने बोला ग्रेटर देन 2 कॉलेजेस, यानी कि 3 और 4 कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 3k + 2k इज 5k, k की वैल्यू 1/13, so 5/13 is the answer. So this particular question gives you an idea that there can be such questions wherein you will find that there is one question and the rest of the consecutive question depend upon the premise which they have given in the earlier one. So you have to be little careful. You should not jump on the question कि 28 देख के आता हूँ अब 19 देखता हूँ, ऐसे नहीं चलो, 1 2 3 4 लाइन से आओ। Okay, now you see this particular question, by the way it has come, I mean I have not tried कि भाई मुझे एक complicated question उठाना है और उसका बच्चों को समझाना है, ये ऐसे ही मेरे पास आ गया। मैंने 49 क्वेश्चन देखा, तो देखिए इसमें भी वही कंपाउंड क्वेश्चन है। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 31 to 35 इन द फॉलोइंग केस। अब आपको ये पहले पूरी थ्योरी समझा रहा है कि f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y इज ए फंक्शन ऑफ x, विच मीन्स दैट इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सप्लिसिटली नहीं हम डिफाइन कर सकते, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया कि ये देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है, where y cannot be written explicitly in the terms of x, because here you see the powers are little different. If you pick y here, take left y and right on the right side you take x, you cannot get it. So first write the equation in x and y, then differentiate both sides with respect to x. ये आपको स्टेप बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और dy/dx जो है इस फॉर्म में लेकर आना है। इसने आपको पूरे स्टेप्स बता दिए। अब इसमें छोटा सा कैच है, उस कैच को आपको देखना है।
x cos a plus y is equal to cos y इसने दिया, then find dy by dx is equal to। अब इनमें से हमें देखना है। अगर मैं इसको यहीं पे ही डिफरेंशिएट करता हूँ, लीनियरली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, cos a plus y प्लस माइनस साइन कुछ आएगा, उससे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। सो इसका एक कैच है विच आई विल एक्सप्लेन यू। ये मैंने लिखी x cos a plus y is equal to cos y, which implies x is equal to cos y upon cos a plus y। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर ये dx आएगा, इसका डिफरेंशियल करूंगा तो यहाँ dy आएगा, dy मैंने यहाँ लिख लिया cos of a plus y इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर आपका आ गया, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। So I get something like this. Now transporting dy upon dx, इसको उल्टा कर दिया cos square a plus y upon sin a। So if you see cos square a plus y upon sin a, इसका आंसर 1 आ गया। इसके अलावा भी इसने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, तो वो उसके आगे आते रहेंगे, इसलिए हमें इस सवाल को मैंने एक ही पार्ट में लिया है, आप आगे भी कर सकते हैं। Now I move to last question. Last question is I have picked up a question which is purely on definitions। ऑल राइट, तो क्या ये डेफिनेशन बेस्ड है, मैट्रिसेस के ऊपर है। मैट्रिसेस में आपको मैंने जब मैं सिलेबस भी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैट्रिसेस मालूम क्या होना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होना चाहिए। सो हियर इट सेज दैट दिस मैट्रिक्स इज ए वेरी सिंपल, कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल डेफिनेशन है। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल सवाल छोटी सी कंप्यूटेशन मांग सकता है, कहीं वो डेफिनेशन मांग सकता है, कहीं वही थ्योरम के रिजल्ट मांग सकता है, जैसे हमने रोल्स थ्योरम का किया, कुछ हल्की सी कंप्यूटेशन भी हमने की डिफरेंशियल में। सो डिफरेंट टाइप्स के सवाल आ सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन में कंटेन मल्टीपल क्वेश्चंस। So I pick up this matrix, it's a diagonal matrix or scalar matrix or symmetric matrix or skew symmetric matrix। Diagonal matrix, you know, where the diagonal elements are non-zero and the rest of the elements are zero, so it cannot be diagonal. Identity is the best example of diagonal. In scalar matrix, instead of 0 0 0 we have 2 2 2 3 3 3 something like this, so that is a scalar matrix। it cannot be a स्केलर बिकॉज इसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए, वो नहीं है, ये स्केलर भी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मीन रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज, सो इट विल बिकम 0 - 3 2 एंड हियर ये वाली जो कॉलम है ये रो बन जाएगी, ये वाली कॉलम जो है ये रो बन जाएगी। तो अगर आप उल्टा करते हैं इस तरह से तो आपको ये दिखेगा साफ कि ये ये करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज नहीं आ रहा, बल्कि ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। A square matrix in which every element except the principal diagonal elements are zero is called diagonal matrix। स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। सिमेट्रिक वो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। सो बेसिकली आपने डिफरेंट टाइप्स के सवाल देखे और बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं और एनसीईआरटी के जो थियरी दी हुई है, please go through it and properly read it, make notes of it, and I'm sure that you will be doing best। And today I have introduced you to the portal also, that how you are going to handle your questions। 5 तरीके के हैं, या तो आपने आंसर किया है तो ग्रीन है, नहीं किया है तो रेड है, और अगर आपने देखा ही नहीं है तो वो वाइट रहेगा। इसके अलावा आपके पास 2 हैं, एक है आपने आंसर भी किया और रिव्यू में डाल दिया है, या फिर आपने सीधा ही रिव्यू में डाल दिया। तो इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे तरह के हैं, एक जहां ग्रीन आ रहा है, दूसरा आंसर्ड विद रिव्यू, यही 2 इवैल्यूएट होंगे, बाकी के आपके इवैल्यूएट ही नहीं होंगे। तो बेटर है
कि आप इनका भी कंट्रोल रखिए अपने अपने बोर्ड पे जब आप एग्जाम दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हाउस इज ओपन फॉर क्वेरीज। Thank you, sir, for your wonderful presentation and sharing your expertise. सर ने इतने अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट के थ्रू he has explained so 100 well. क्लास चल रही है। I hope कि बोलो खड़ा रहे, students have got very good idea. खड़े रहे, खड़े रहे, 15 मिनट खड़ा Very रहे। good idea that हाँ how to हाँ। attempt the questions. और सर ने सभी अपनी वेबसाइट्स भी खोलकर अच्छे से he has shown all the details. तो thank you sir, thank you once again. Thank you for coming, that you took out valuable time from busy schedule and you have come here. So thank you sir, thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Now I invite students for the questions. Uh, if you have questions, please ask. Where can we find the answers to the mock tests? Uh, I think, sir, answers of mock tests are not available. नहीं नहीं, they are there. If you answer all questions, you submit it, then it will tell you. You have to answer all questions. It will not give one by one. Any other question? So for syllabus and for practice, you can go through all the websites, government websites, which are being shared with you. So if we answer more than 40 questions, then how will the marking be done? Tanvi, I think see this since it is a computer-based exam, so I don't think it will allow you to do so. As soon as you reach the 40, it will give the indication that you have already answered 40 questions. So that is the beauty of all such kind of CBTs, and I hope that this kind of thing will also be here. Normally I'm telling you this about the general CBTs, but I expect and we all expect that this type of will be there. Anyway, you can check it there also. Thank you, Tanvi. Any, can we leave any question in section A, as No, there is negative mark? no. Section A is a compulsory one, and it has 15 questions. You have to answer all. And I think that it is everywhere in all kinds of discipline subject. Parul ma'am, in your subject also, first 15 were, Yes, yes, yeah, yes, sir. Pattern is same. pattern is same. So I hope, Madhu, you have got your answer. Thank you, Madhu. Any other question anyone would like to ask? Uh, just an announcement that students, those who are interested in further sessions, we have got a telegram group. They can join that telegram group. We give all kinds of information there regarding these sessions. Thank you, Punam ma'am. Thank you. Madhu ma'am, we gave the link of both okay, I'll share the link to the telegram in the telegram.
in the Telegram group, we put both the links. One for this, this particular Google Meet, and the other one is that YouTube link that is also available in the Telegram group. Uh, Ravi, can you share that Telegram group? Uh, Ravi, are you there? Yes, sir. मैं क्या पूरे लिंक्स भेज दूं सारे? आप उसमें ग्रुप में डाल देना, यहाँ पर पेस्ट कर दो। आज वाले लिंक्स मैं अभी डाल देता हूँ, 1 मिनट में। आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप इधर शेयर कर दो प्लीज। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हूँ। आप व्हाट्सएप पे नहीं है? वो पंकज जी हैं सर यार? रुकिए रुकिए, मैं ही करता हूँ किसी तरीके से। 1 मिनट होल्ड करिएगा तो। Just give me 1 minute. Huh? So, sir is sharing some links with you. The Telegram group. Yeah, link for that Telegram group. A student has shared, sir. Madhu. The student has shared it. It's fine. I did everything. चलो कोई नहीं, बात नहीं है, उसने किया तो अच्छा है। 1 minute. I will also share. हाँ ठीक है बेटा, मैंने सारे लिंक्स कर दिए। देखिए ये सारे आ रहे हैं, या खाली टेलीग्राम ग्रुप तो ठीक किया उस बच्चे ने। इसमें सारा Okay. डिटेल आया कि नहीं सारा? डिटेल्स आपका आ गया सर। ये सेशन का डिटेल्स है। सेशन का यूट्यूब वाला वो लिंक नहीं आया ना? नहीं नहीं, सेशन का मीट लिंक है वो गूगल बच्चे ने ठीक किया है, जिसने भी किया वो ठीक है, जी। वही यूज So कर। these links are correct, which Yeah. Madhu has shared. या This link is correct. या दैट लिंक इज। Okay. Any other question? Any question? So, shall we wind up then? राइट मैम। Okay. So, now let us wind up the session, and I would end the session with a vote of thanks. First of all, I would thank our Honorable Vice Chancellor for taking initiative in organizing such a noble program. I will extend my sincere thanks to Professor Pankaj Arora, Director ILLL, for his guidance and motivation in organizing this program. I give my special thanks to Professor Tuteja for taking out time from his busy schedule and sharing knowledge with us. I thank our organizing team who have been putting a lot of efforts in making this program successful. I thank support staff ILLL also for providing technical help. And last but not the least, all the participants. A big thank you to all the participants for their patience, participation, and enthusiasm. And I give my best wishes to all the students for their examination. So, thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।